हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत सभी सबके जो है हम पर गुड मॉर्निंग रमनदीप, गुड मॉर्निंग गौहर, सभी को गुड मॉर्निंग सुबह जी। फटाफट लाइव हो जाइए, ऑडिबिलिटी कंफर्म रहना। ऑडियो आ रहा है, आवाज आ रही है हमारी कि नहीं? आवाज आ रही है ना? एवरीथिंग फाइन? आवाज आ रही है तो यस्टरडेज क्लास पे भी क्वेश्चंस, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उन्हीं डिस्कशन को आज फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक पोएम है द थॉर्न, राइट? द थॉर्न इज अ पोएम, ये तो कल हमने डिस्कस कर लिया था। दिस क्वेश्चन, bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven, from which poet the line have been taken? कहां से, किस पोएट से लाइन ली गई है? This was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven, right? रिपीटेडली ये लाइंस पूछी गई हैं, रिपीटेडली कई बार, और हमने भी इसको खूब डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट मी नो द आंसर, फ्रॉम विच पोएट या हु रोट दीज लाइंस? ये लाइंस किसकी हैं? ब्लिस वॉज इट इन दैट dawn to be alive but to be young was very heaven. These lines are from the poem French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लाइन है ये, and the poem French Revolution was written by William Wordsworth. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven, very heaven. निशु, आप अपने पैनल के पीडीएफ सेक्शन में जाओ ना, एप्लीकेशन का जो पीडीएफ सेक्शन है वहीं पर आपको मिल जाएगी, अदरवाइज तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां से आपको मिल जाएगी। एक ये क्वेश्चन है, Deepika, good morning. In Wordsworth's prelude, the boy of Menander is affected by. Wordsworth's prelude is his autobiographical poem divided into 14 books, published in 1850, right, with the complete title The Prelude or Growths of Poet Minds, an autobiographical poem dedicated to Samuel Taylor Coleridge, right? And in the poem, a boy appears, a boy of Binando, and he is affected by the disease muteness. चलिए बताइए आंसर, ये आपके टीजीटी क्वेश्चन है। The prelude, although begun as early as 1799 and finished in its first version in 1805, was not published until, कब तक पब्लिश नहीं हुआ था? एंड ऑप्शंस आर 1815, 1820, 1813 and 1850. When was the prelude published? Wordsworth started writing of poems in 1799. prelude 1799 में शुरू हो गया था, but it was not published till late. बहुत दिनों तक ये पब्लिश नहीं हुआ. And the question is, when was it published? And one more fact is written in the question, and that is, first draft of the poem prelude was completed in 1805. First draft was completed in 1805. When was it published? Shabash Anita. The poem was published in 1850. Right? It was published in 1850 after the death of William Wordsworth. It was a posthumous publication.
posthumous publication का मतलब कि published after death, right? Published after death. Next question. Question with answer. In book 5 of Prelude, Wordsworth dreams of an Arab in the desert after reading which great work? Prelude is divided into 14 books, and out of 14 books, in one of the books, book number 5, Wordsworth dreams of an Arab in the desert after reading which great work? And this great work was Cervantes' Don Quixote. Cervantes was an Spanish writer, right? Cervantes was an Spanish writer and he is known for his novel डॉन कीहोटे. डॉन कीहोटे के लिए जाने जाते हैं. डॉन कीहोटे इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल है. A letter, a number of English writers, right? A number of English writers wrote in imitation of Don Quixote, और उसमें भी सबसे पॉपुलर है जोसेफ एंड्रोज, written by Mr. Henry Fielding, the father of English novel, right? और यहाँ से ये भी इंस्पायर्ड है. और सर्वेंटीज की डॉन कीहोटे में अरब आता है, he dreams of an Arab, और after reading the work, right? Don Quixote. Next question. Which British university figures in William Wordsworth's The Prelude? Which British university figures in William Wordsworth's The Prelude? ये सब क्वेश्चन आपको बता चुका हूं. Wordsworth was the student of Cambridge University and The Prelude is an autobiographical poem. So obvious answer is Cambridge, because he was the student of the Cambridge and he writes about his student life in The Prelude. Next question. In the opening book of The Prelude, Wordsworth mentions famously that he was fostered alike by two things. And which two things? कौन सी वो दो थिंग्स थी? वो दो थिंग यहां पर देखिए आंसर दिया है, ब्यूटी एंड फियर, राइट? ब्यूटी एंड फियर. द न्यू लाइसियम के नाम से है निशु, द न्यू लाइसियम, इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर जेके तिवारी, LYCEM, लाइसियम. Clear. In the opening book of The Prelude, Wordsworth mentions famously that he was fostered alike by beauty and fear, right? Next. An English poet couldn't help the excitement that an historical event caused in his lifetime. Right? An English poet could not help the excitement that an historical event caused in his lifetime, and bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. Which poet? What dawn? Right? Same question in different manner. अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन पूछा गया है. अब इसका आंसर दीजिए. Right? An English poet could not help the excitement that an historical event caused in his lifetime. Right? Who was the poet? Poet was William Wordsworth, and the poem was French Revolution. The dawn जिसकी बात कर रहा है ये, the dawn was of French Revolution. Bliss was it in that dawn. Which dawn? French Revolution. Right? But to be young was very heaven. All right. Which version of the lyrical ballads was first one to have
द प्रीफेस बाय वर्ड्सवर्थ। बोलिए इसका आंसर। शाबाश, दीजिए फटाफट आंसर दीजिए। Preface to lyrical ballads was published in which version of the lyrical ballads was the first one to have the preface by Wordsworth? 1798, 1800, 1802 or 1804? Which version has a preface? Which version of, नहीं बताओगे? शाबाश, अनीता has now responded it was the second edition of lyrical ballads, and second edition of lyrical ballads was published in 1800, and in this edition Wordsworth added a preface, जिसको preface to lyrical ballads कहते हैं। second edition में हुआ था, गौहर 1802 में नहीं। देखो 1798 में पब्लिश होता है, और जब ये पब्लिश होता है तो इसके साथ एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट एडेड था, और 1800 जब आता है तो इसके साथ एक प्रीफेस एडेड होता है, और जब 1802 आता है ना तो इसके साथ एक अपेंडिक्स लगी होती है, एंड द नेम ऑफ द अपेंडिक्स वाज पोएटिक डिक्शन। और 1802 में ही लिरिकल बैलेट्स का अमेरिकन एडिशन पब्लिश्ड होता है, राइट? अमेरिकन एडिशन पब्लिश्ड होता है 1802 में ही। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट ऐड किया गया था सेकेंड एडिशन में, एंड दैट सेकेंड एडिशन वाज 1800, इन 1800, क्लियर? 1800 में आर्ट हुआ था वो। ये देखिए यहां पर एक मेजरमेंट की बात कर रहा है, राइट? मेजरमेंट की बात कर रहा है। व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम हिज पोम द थॉर्न? I have measured it from side to side. It is 3 feet long and 2 feet wide. I have measured it side by side. It is 3 feet long and 2 feet wide. और पूछ रहा है कि किसकी डेफिनेशन है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? और ये डिस्क्रिप्शन है उसका, डिस्क्राइब कर रहा है एक छोटी सी ग्रेव को, इन्फेंट्स ग्रेव। कॉर्न इज द पोएम, एंड द लाइन, द मेजरमेंट जो है, I have measured it from side to side, 3 feet long and 2 feet wide. ये कब्र की, इन्फेंट के ग्रेव की बात यहां पर कर रहा है थ्रू दीज लाइन्स। Which of the following statements about the lyrical ballads is not true? सारे लोग पढ़िए और सारे इसका आंसर करिए। सभी लोग पढ़िए, सभी लोग इसका आंसर करिए। यही क्लास डी ट्रिपल एस बी के पीजीटी की पढ़ करके 4-5 स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई हुए हैं, कल का रिजल्ट आया है। 4-5 स्टूडेंट नेट क्वालिफाई के, कई सारे मैसेजेस भी आए, मैं तो सारे भी देख भी नहीं पाया हूँ।
Four statements about the lyrical ballads is given, and out of the four, three are correct, one is not correct, and you have to find out the incorrect one. It carried only one proper ballad, which was Coleridge's Rhyme of the Ancient Mariner. Is it true? True है कि नहीं? It also carried pastoral and other poems. I hope it's also true, and I had told you in your class, Michael, a pastoral poem, इसी की poem है, तो ये भी true है. It carried a preface which Wordsworth added in 1800. ये भी सही है, इसकी बात तो अभी आपने करी है. And it also printed from Grace Elegy written in a country churchyard. This is not true, because in lyrical ballads only two people, only two poets contributed, और वो थे वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. देयर वाज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस ग्रे, एंड थॉमस ग्रे's elegy in a elegy written in a country churchyard was published in 1751, around 50 years before the publication of the lyrical ballads. Hence option D is not true. Deepika, you are very right. Right, D option is not true. Rest of the three are true options. All right. Next question. What was the name of Wordsworth's daughter? वर्ड्सवर्थ की डॉटर का क्या नाम था? बायोग्राफिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट है तो है, क्या कर सकते हैं, आंसर तो आपको करना ही है. The name of Wordsworth's daughter was Caroline. ये वर्ड्सवर्थ की डॉटर है जी अनीता, बिल्कुल. नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ रिवोल्टेड अगेंस्ट. वर्ड्सवर्थ रिवोल्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया वर्ड्सवर्थ ने? क्लासिसिज्म के, मेडिवलिज्म के, मॉडर्निज्म के, या किसी के खिलाफ नहीं? निशु ये बताओ पहले ईमानदारी से कि क्लास में जो पढ़ाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीडीएफ? और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, सेम पीडीएफ आपको एज इट इज जाएगी, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्लास में अटेंशन दे करके पढ़ने की जरूरत है. तो पीडीएफ इज योर राइट, आपका राइट है पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल भी जाएगी, एंड यू विल गेट द प्रिंटेड पीडीएफ, और उसके बाद यू विल पुट इट इन योर लाइब्रेरी. You will put the printed PDF in your bookshelf, और उसके बाद कुछ होगा नहीं उसका. जो चीज आप सुन रहे हो ना, जो चीज आपके दिमाग में बैठ रही है ना, वो परमानेंट, उसको बैठाइए पहले. जब परमानेंट बैठाने की बात है तो तुम पीडीएफ के पीछे पड़ी हो. एक बार बोल दिया ना कि पीडीएफ सेक्शन में देखिए,
और नहीं है तो रिसेप्शन पे वहां कॉल करिए अध्ययन मंत्रा पे। मेरे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है कि मैं अपलोड कर पाऊं। राइट, मेरा काम वो टीचर का है, टीचर का है, नोट्स बना के देना है इंस्टीट्यूट को, और वहां पे नोट्स अवेलेबल है, आप उनको कॉल करिएगा, वो आपको नोट्स देंगे, मेरे एंड से नहीं होगा वो। राइट, मेरे एंड से तो वो नहीं होगा, वो वहीं से मिल सकता है। मेरे एंड से जो मिल रहा है ना, वो बिल्कुल आपके स्क्रीन पर आपको मिल रहा है। वर्ड्सवर्थ ने रिवोल्ट किसके खिलाफ किया था? क्लासिसिज्म, मिडिवलिज्म, मॉडर्निज्म, या किसी के खिलाफ नहीं किया था? एंड यू नो द आंसर टू द क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ रिवोल्टेड अगेंस्ट नियो क्लासिसिज्म। Right, he revolted against the classical formula, he revolted against the classical restrictions of poetry, he revolted against classical set pattern of poetry, right? And Wordsworth favored medievalism, and entire romanticism जो है वो medievalism के फेवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इज सेड टू बी अ और एन। वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है? Wordsworth is said to be an aristocrat, a republican, a pantheist या an atheist। क्या कहते हैं वर्ड्सवर्थ को? एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड है पैन, उसका नाम, और पैन वाज द गॉड ऑफ नेचर। राइट, गॉड ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ वाज वर्शिपर ऑफ नेचर। राइट, वर्ड्सवर्थ वाज वर्शिपर ऑफ नेचर, और hence right answer to question is C, pantheist। Pantheist is one who believes that nature is everything, nature is everything and everything is nature। nature is everything and everything is nature, उसे pantheist कहा जाता है, and hence right answer to question is pantheist। all right, next question। ये सब कल का ही क्वेश्चन है, अगर आपने कल वाली क्लास पूरे मन से पढ़ी होगी ना, you will be in a position to answer all these questions। नो, गलत जवाब।
3 years she grew in sun and shower. These are the lines from a poem by William Wordsworth, and the poem was published in the Lyrical Ballads. चलो कोई बात नहीं, ये एजुकेशन ऑफ नेचर इसको कहते हैं, एजुकेशन ऑफ नेचर, ये इसका डैफोडिल्स इसका आंसर नहीं है. In which poem Wordsworth mentions the phrase marvelous boy? In which poem Wordsworth mentions the phrase marvelous boy? marvelous boy की बात किस phrase में करते हैं, किस poem में करते हैं? And I told you about a few poems yesterday. On in one of the poems he pays his tribute to Thomas Chatterton and the Plowman's poet Robert Burns. And in which poem Resolution and Independence, the Cuckoo, the Daffodils, or River Dudden sonnets? Right? He described Thomas Chatterton as the marvelous boy. Thomas Chatterton was a poet, transitional poet है, and he has been described as a marvelous boy and a sleepless soul. और कहते हैं कि he perished in his pride. और वो marvelous boy Thomas Chatterton appears in the poem Resolution and Independence. ये इसका है करेक्ट आंसर, ये इसका है राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who described as the marvelous boy the sleepless soul that perished in his pride? अब इसका तो आंसर कर लोगे ना. Who is described as the marvelous boy the sleepless soul that perished in his pride? और इसका आंसर अब आपको पता है. The answer is C. He means Thomas Chatterton. मजा आ रहा है MCQs में कि नहीं? MCQs तो बहुत मजेदार होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ ईमानदारी से. नेक्स्ट. Which is described as the stern daughter of the voice of God? Voice of God की stern daughter किसको कहा गया है? Which is described as the stern daughter of the voice of God? Nightingale, cuckoo, skylark or duty? फटाफट करो आंसर. Right, stern daughter of the voice of God. Stern का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट. और ईश्वर की डॉटर कौन है? स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, एंड इट इज ड्यूटी. Ode to Duty is the poem, and Ode to Duty is the poem start with the line stern daughter of the voice of God, that is duty. Clear? Character of the happy warrior. Character of a happy warrior is a novel by Wordsworth, a poem by Wordsworth, a play by Charles Lamb, a story by Coleridge. What is character of the happy warrior?
कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, राइट। इट इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। A complaint is a poem by. A complaint is a poem by. किसकी पोएम है? A complaint. ऑब्वियस सी बात है कि वर्ड्सवर्थ चल रहा है तो आप तो चूज कर ही दोगे, पिक कर ही दोगे। अ कंप्लेंट इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रॉब्लम तो तब होती है ना जब एग्जाम में आता है। एग्जाम में आता है तो हमको ये नहीं पता चलता कि कहाँ से है, बट आ ही जाता है ना। जो पता नहीं चलता कहाँ से है, समस्या खड़ी हो जाती है। चलो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following poems is also known as leech gatherer? Which of the following poems is also known as leech gatherer? The French Revolution, I wandered lonely as a cloud, composed upon Westminster Bridge, September 3, 1802, and Resolution on Independence. Which poem is also known as leech gatherer? बोलिए फटाफट। लीच गैदरर के नाम से कौन सी पोयम जानी जाती है? Which of the following poem is also known as leech gatherer? Right answer is D, resolution and independence. Very true. Resolution and independence is known as leech gatherer. In the poem, Wordsworth comes across a leech gatherer. Which of the following poems is not composed by William Wordsworth? Nutting, The Green Linnet, A Complaint, The Triumph of Life. Which of the following poems was not written by Mr. William Wordsworth? Right, Mr. William Wordsworth wrote these three poems, and the fourth one, The Triumph of Life, is a poem by Percy Bysshe Shelley. ये पीबी शैली की पोएम है, राइट। पीबी शैली की पोएम है ये। रेस्ट ऑफ द थ्री वर रिटन बाय मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर? Mutability is a poem. Mutability is also poem, and this Mutability is a poem by William Wordsworth, Coleridge, Milton, or John Keats. Anita, Nutting is a poem by Wordsworth, right? Nutting is a poem. Green Linnet is a poem by William Wordsworth, right? Milton is a poem by William Wordsworth. London 1802 जो है वो मिल्टन पर है, राइट। और कॉलरिज को डेडिकेटेड है उनकी पोयम। एक उनकी पोयम भी है जिसका नाम था पहले टू कॉलरिज, और टू कॉलरिज ही बाद में प्रिल्यूड बन गई है, राइट। टू कॉलरिज लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और टू विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा था कॉलरिज ने। ऑलराइट, राइट आंसर यहां पर क्या है? म्यूटेबिलिटी इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। म्यूटेबिलिटी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। नेक्स्ट,
Wordsworth and Coleridge were very fast friends, and together they brought out poems in the volume Lyrical Ballads, right? And I had told you about the plan of the Lyrical Ballads ki what was decided between them कि वो किस मुद्दे पर लिखेंगे और ये किस पर लिखेंगे. Wordsworth and Coleridge met by chance. मुलाकात हो गई थी इनकी कब और कहाँ. ऑप्शन से है सॉमरसेट इंग्लैंड 1795, पेरिस फ्रांस इन 1791, Geneva, Switzerland in 1798, or nowhere, none of the above. Where they met by chance, where they came across. This is the question. And Wordsworth and Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, they first met in 1795. 95 की उनकी मुलाकात है और 3 साल का दोस्ती है उनका लिरिकल बैलेड्स. राइट, तो राइट आंसर यहाँ पर है सॉमरसेट इंग्लैंड. They didn't meet in France. In fact, they met in England. They met in Somerset in 1795. Next question. Wordsworth writes of him who walked in glory and in joy, following his plough along the mountain side. Who is being referred here? किसका रेफरेंस यहाँ पर वो दे रहे हैं? Wordsworth writes of him who walked in glory and in joy. Right? Who walked in glory and in joy, following his plough along the mountain side. Who is being referred here? अब देखिए, from the question answer is clear. और आंसर क्या है? Here he is talking about his plough. So if you know who is the ploughman's poet, if you know who is the ploughman's poet, it means you know the answer. आपको आंसर पता है. And who is known as ploughman's poet? Ploughman's poet is none other than Robert Burns. Robert Burns. And from which poem these lines have been taken? कहाँ से lines ली गई हैं? Then the answer is Resolution and Independence. Resolution and Independence. And in this poem, he pays his tribute to the poets who died at the very young age. And उसमें चार्टर्टन और रॉबर्ट बर्न्स है. तो राइट आंसर इज हियर रॉबर्ट बर्न्स. राइट, who walked in glory and in joy, following his plough along the mountain side. All right, the right answer to question is B. It is Robert Burns. Next question. Which of the following poets is not mentioned by Wordsworth in his Scorn Not the Sonnet? Scorn Not the Sonnet is a sonnet that he wrote in defense of sonnet. In defense of sonnet, sonnet was a genre that was attacked during the time of William Wordsworth, and William Wordsworth wrote Scorn Not the Sonnet to defend the sonnet, and one more sonnet, Nuns Fret Not, that is also known as sonnet upon sonnet. Right? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है which of the following poets is not mentioned by Wordsworth in his Scorn Not the Sonnet, and I had narrated the entire poem to you yesterday. Right? Entire poem आपको बताई थी. And Edmund Spenser, John Milton, Petrarch are mentioned there, but Philip Sidney is not mentioned. Hence B is the right answer. Right? Philip Sidney is not mentioned there. Rest of the three found place in Wordsworth's sonnet is Scorn Not the Sonnet. All right. Next question. Which of the following poems is not composed by Wordsworth?
कौन सी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी थी? The sparrow's nest to a butterfly, the idiot boy to a skylark. सोचो फटाफट, गेस करो. To a Skylark is a poem by Mr. P.B. Shelley. और एक पोएम और भी है सेम नेम से, और वो है द स्काईलार्क, और वो है मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ की. तो नॉट कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ, यहां पर आंसर आएगा डी. Next question. Which of the following poems is a moving tribute to Wordsworth's sister Dorothy? Right? Dorothy को कौन सी पोएम ट्रिब्यूट है? Which of the following poems is a moving tribute to Wordsworth's sister Dorothy? The Sparrow's Nest, Elegiac Stanzas, To a Butterfly, and The Solitary Reed. 4 options are given here, and you have to find out the right option. You have to find out the correct option. Correct option कैसे फाइंड आउट आप करेंगे? नाउ आई लीव दिस टास्क टू यू, राइट? ये काम आप पर छोड़ता हूं, और आपको फाइंड आउट करना है कि कहां से ली गई है. विच पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू Wordsworth's sister Dorothy, right? Wordsworth was the poet and he paid his tribute to his sister Dorothy, and the question is, in which poem he paid his tribute? In which poem Wordsworth paid his tribute to his sister Dorothy? Next question, that is again for your assignment. The River Dudden Sonnet, a series of sonnets, contains how many sonnets are there in River Dudden Sonnets? It is a series of sonnets by William Wordsworth, and you have to tell the number of sonnets, कि कितने sonnets लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें. ये भी आपका एक असाइनमेंट है. और फिर है अगला पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज, and we will start this poet tomorrow. Thank you for today's class. All the best. Meet you tomorrow. कल मिलते हैं. 2 questions are for your assignment. You have to look for the answer, you have to search the answer, and you will here come with the answers of those 2 questions tomorrow. All right, all the best. Bye bye, good luck.